Acha, so a lot of people are having some issues with VoIPs. So I'm just gonna speed run through it. Take care, you're gonna need two routers and make sure it's the 2811 wala router, because this is the only router that has VoIP and telephony services on it. बाकी किसी router पे काम नहीं करता. I've tried it before. Those switches and IP phones, you know, not normal. ये एक तो phone है ना ये वाला नहीं. You need IP phones. ठीक है. So grab two of these. ठीक है. I'm gonna show you how to first configure them on a single router and then how you can make them communicate with each other, क्योंकि वो भी system होता है सारा. तो first of all just connect everything up, like connecting the router first, क्योंकि वो सबसे पहली वाली पोर्ट होती है ना FA00 ऊपर लग जाती है, which is handy. अच्छा, also the thing with these routers is they come like completely empty. उनको if you want to have a serial input, use this WIC2T. ये serial inputs डालता है, and you're probably gonna be needing some fast Ethernet वाले as well. तो this is the fast Ethernet option, this one. ठीक है, the NM2FE2W, this one जो लंबा सा है. ठीक है, I don't need it. I'm gonna take it out. I'm also gonna turn it on as well. भूल गया. इसके बाद do this for the second router as well. Turn it off, VIC2C, turn it back on, boom. ठीक है. इसके बाद we need to configure a VLAN. ठीक है, तो enable conf t VLAN 10, name VoIP, exit int FA0/0, switch int FA0/1, switch port mode trunk, int range FA0/223, switch port mode access, switch port voice VLAN 10. यहाँ पे जो आपका VLAN नंबर है वो आता है. exit. इसके बाद your switch configuration is done. You need to go to the router and you need to do a few things. No, enable conf t. इसके बाद you need to make a DHCP pool. So सबसे पहले IP DHCP excluded address, and we're just gonna exclude the gateway 1 IP DHCP pool VoIP and network 192.168.1.0 255.255.250 default dash router 192.168.1.1. यहाँ पे गेटवे देते हैं. ऑप्शन 150 IP 192.168.1.1. ठीक है. इसके बाद इनकैप्सुलेशन करनी है, तो int FA0/0.1 encapsulation .1q 10 IP add 192.168.1.1 255.255.250. now shut. इधर से नहीं होता. you need to turn it on from here. हाँ, यहाँ से ऑफ है ना. अब हुआ ऑन 0.1. इसके बाद अब आते हैं ना टेलीफोनी सर्विसेज. टेलीफोनी सर्विसेज सिज मतलब सिंगल विदाउट दी एस. इसके बाद मैक्स ई फोन, just the number of phones you want. I'll have 3. 2 लगाए हुए हैं. maybe I want another one in the future. तो max DN 3. it's the same thing. ठीक है. इसके बाद if I remember correctly, you write IP source address, give the gateway, and then write port 2000. Port 2000 is gonna remain the same for every single thing you configure. जितने भी आप VoIPs configure करोगे, the only thing that's gonna change is this gateway. ठीक है. auto assign 1 2 3. ठीक है. exit. इसके बाद ephone -dn1 number 1001
ephone dash dn2 number 1002, ठीक है, exit. इसके बाद just go back to your phones and then turn them on. यहाँ से नीचे तार पकड़ो, turn them on, go to your second phone, turn them on, turn this on as well, ठीक है, and fast forward a few seconds जो नीचे blue bar नहीं है उससे, and hopefully you should have your numbers. ये क्यों नहीं लग रहा? Boom 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 boom, go to the GUI, boom. Oh shit, मैंने बहुत ज़्यादा zeros डाल दिया, shit. Oh इसमें अच्छा, I'll just fix that. I don't like an extra zero. मैंने 10,000 वन दे दिया. तो ephone dn1 नंबर इसका होना चाहिए 1001, एग्जैक्ट, ठीक है. ट्राई दैट अगेन. इसको ऑफ करो, इसको ऑन करो दोबारा से, फास्ट फॉरवर्ड अ फ्यू सेकेंड्स एंड बूम 1001. दिस इज़ डन. सेकंड सेम थिंग, इधर जाओ, क्रिएट VLANs, CLI में enable conf t VLAN. अच्छा, make sure now this is something that I've noticed. अगर I've noticed कि if I give in a single file, if I give two VoIP VLANs the same number, for some reason phones काम नहीं करते, तो make sure कि जो आपका voice VLAN है ना उसका number हर जगह different हो, ठीक है. I don't know why this happens. It happens. It happened with me, so I'm just gonna do it the way I know how to. Name VoIP 2, ठीक है. As for VoIP 2, ठीक है. And इसके बाद exit, int fa0/1 switch port mode trunk, int fa0 int range fa0/223 switch port mode access switch port mode switch port voice VLAN 15, ठीक है, exit. इसके बाद your switch is done. Go back to the router, let's configure, no, ठीक है, enable conf t. इसके बाद IP DHCP excluded, address 192.168.102.1 इधर दूसरा पूल होगा ना. IP DHCP pool VoIP2 network 192.168.2.0 255.255.255.0 default router 192.168.2.1 option 150 IP 192.168.2.1 exit. Int fa0/0.1 encapsulation.1q 15 IP add 192.168.2.1 255.255.255.0. इसके बाद you're gonna have to telephony service, ठीक है. इसके बाद there was this max ephone वाला था, max ePhones ePhone 3 max dn3 IP source dash address 192.168.1.2.1 port 2000 auto assign 1 2 3. इसके बाद exit. This is done as well. ePhone dn-dn1 number 2001 ePhone dn2 number 2002, ठीक है. इसके बाद just go here, turn your gateway on, ठीक है, and then turn your phones on. If I did everything correctly, it should work. If I didn't miss anything, then it won't work. इंशाल्लाह काम करेगा. Fast forward a couple of seconds, ठीक है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम.
2001, 2002, boom, ठीक है. Now that your phones are configured, you're gonna be able to ring each other, ठीक है. वो एक दूसरे को 1002, ठीक है. ठीक है, they're gonna be able to ring each other, but they're not gonna be able to ring each other like each other, you know, across the router. तो उसके लिए we're gonna have to first set up routing on these routers, ठीक है. उसके लिए it's gonna set up rip routing, ठीक है. 2 पे तो go to 2. Either I'm just gonna give 192.168.10.1, ठीक है. Control C, turn it on. इधर जाके serial 2 पे तो इधर भी 10.2, ठीक है. 192.168.10 control V .2, ठीक है. Turn it on. इसके बाद we're gonna configure rip routing on both of them. इधर 10.0 ऐड हो रहा है और 2.0 ऐड होगा. इधर भी रिप पे जाके 10.0 and 1.0, तो 1.0. Just to make sure it works, ping the phones, ठीक है. if they're successful, rip routing काम कर रही है. Now the next step is called dial peers. You're gonna have to set up dial peers, ठीक है. And you do that by dial dash peer. Let me try to remember. Voice. What dial peer voice? Peer voice 10 VoIP, ठीक है. यप, यही था, ठीक है. इसके बाद destination dash pattern, ठीक है. And you give it the अच्छा, let me explain this a little bit, ठीक है. dial peers are like similar to OSPFs. Not really, लेकिन you know how you give OSPFs numbers, this OSPF 1 blah blah blah. dial peer voice 10, it's like 10 जो है ना, it's just one instance of dial peer, ठीक है. इसके अंदर you're telling the router के अगर आपका destination pattern ये हो, ठीक है, जो मेरा 2000 डॉट, ठीक है. अब 2000 डॉट का क्या, 200 डॉट का क्या मतलब है, ठीक है. 200 इज़ द स्टार्टिंग 3 लेटर्स ऑफ द डेस्टिनेशन वाला फ़ोन. अगर इस नंबर, अगर 200 से कोई शुरू हो रहा है ना नंबर, उसके एंड पे डॉट, द डॉट इज़ द वेरिएबल नंबर, ठीक है. डॉट चेंज हो सकता है, ठीक है. तो फॉर इंस्टेंस इसमें 200 एंड मतलब 2001 था ना, एंड 2002 था, तो 200 सेम है दोनों में ना, 1 और 2 चेंज हो रहे हैं. तो द थिंग दैट चेंजेस व्हाट यू सेट एज अ डॉट, ठीक है. दैट्स द डॉट थिंग, वो चेंज हो सकता है. एंड द थिंग यू राइट हेयर डेस्टिनेशन पैटर्न 200, अगर 200 से शुरू हो रहा होगा इट्स गोना नो कि इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है. डेस्टिनेशन पैटर्न. इसके बाद सेशन टारगेट, ठीक है. and IPv4 and you give the gateway of the network जिसके अंदर ये आपका जो ये वाला नेट फ़ोन नहीं है वो लोकेटेड है. तो 192.168.2.1, ठीक है, गेटवे, ठीक है. एग्जिट. That's how you configure dial. Same thing on this router as well. Go over here, exit, dial peer dash peer voice 10 VoIP, ठीक है. द नंबर डजेंट मैटर, यहाँ पे मैं 20 भी लिख देता, इट वुड वर्क. इसके बाद यू गिव इट द डेस्टिनेशन पैटर्न, डेस्टिनेशन डैश पैटर्न, एंड यू गिव इट द, इसके लिए 100 डॉट होगा क्योंकि 1001 एंड 1002 तो ये दोनों में आ रहे हैं. एंड यू गिव इट सेशन टारगेट IPv4 colon 192.168.1.1, ठीक है. What's this? Session target IPv4. I forgot the V. ठीक है. Exit. Now क्योंकि डायल पेयर सेटअप हो गए हैं, I should be able to call 2002. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Oh yeah, काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. फर्स्ट ट्राई काम करे, यू नो,
connected. So now these two are connected, and that is how you do VoIPs over multiple routers.